Okay, so dear students, today we all are going to do the equation formation work for doing the questions which are problem based on the chapter linear equation. Okay, yes, everybody has to write everything in your fair copy. You have to write down on the heading like in a page that equation formation. Okay, now situation will be given by me. Okay, situation will be given by me, equation formation will be done by you, and remember variable will be according to me. You will not choose the variable according to you. Okay, variable will be chosen by like what I will be giving it to you, that say ताकि similar सबका आंसर है. ठीक है, चल. So my first question is, okay, so very right. As I can see, I have given you the condition that there are two brothers and both are having the marbles. One is having another one's 7 less. ठीक है, one is having 7 less than the another one. So अगर आप assume करते हो m is the number of marble, so एक भाई को मिलेगा m marble और दूसरे को मिलेगा m minus 7. Why m minus 7? Because एक जो है वो दूसरे से 7 कम है. तो अगर आप एक को m एज्यूम करते हो तो दूसरा वाला मिल जाएगा m माइनस 7. ये होती है पहली कंडीशन किसी इक्वेशन के पहले एज्यूम करने की कि इसको कितना लेना है. ठीक है, ये आपने ले लिया. नाउ सपोज इफ आई गिव यू द कंडीशन that if the total marble of like all together, if total marble all together is 21, if total marble altogether is 21, what, how will you represent in the form of equation? Try. Now remember beta, the whenever we tell you to form the equation, remember we always use the situation of hint. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट बोला, the statement was that if you take all together the whole marble, it gives you 21. तो आपको पता है एक भाई के पास m था, दूसरे भाई के पास m माइनस 7 था. So अब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे, because I am giving you the situation when you add all together, when you take all together the marble, the total number of marble is 21. So it will give you m plus m minus 7 is equals to 21. ठीक है, m plus m minus 7 is equal to 21. ठीक है, this will be the equation formation. ठीक है, ये दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन. अब इसके आगे क्या सॉल्व करना है, दैट इज द इक्वेशन पार्ट जो कि हम लोग सॉल्व करना सीख चुके हैं. सो अभी हम लोग उस पे नहीं जा रहे. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड सिचुएशन. सपोज यू हैड सम नंबर ऑफ लड्डूज. ठीक है, नाउ नंबर ऑफ लड्डूज आई एम टेलिंग यू टू चूज बाय एल. ठीक है, दिस टाइम यू आर चूजिंग द वेरिएबल एल. सो यू हैड सम लड्डूज, you have distributed 2/3 of the total number of laddus. ठीक है, you have given 2/3 of total number of laddu to somebody. ठीक है, somebody, it can be a person, it can be a friend, it can be anyone. ठीक है, so 2/3 of the total number of laddu you have given to somebody. Now you are left with only 4 laddus. Now you are left with only 4 laddus. How will you form the equation? Yes, so I told you that you had some laddus, so maybe you had laddus L. ठीक है, आपको वेरिएबल मैंने दिया L. So L is the number of laddu. Then I told जितने लड्डू आपके पास थे उसमें से आपने 2/3 of total number of laddus को किसी को दे दिया. ठीक है, you have given 2/3 of laddu which you had to somebody. So now उसमें से 2/3 of number of laddus निकल गया. Then you are left with only 4 laddus. You are left with only 4 laddus. How will you represent the form of equation? This was my question. Yes. Now see, I have told you that you had L laddus. आपके पास L थे पहले से. ठीक है. Now this you had. Now I have told that you have given 2/3 of this total number of laddus to somebody. So 2/3 into L. ये आपने दे दिया और जितना दे दिया इसको अगर आप सॉल्व करो इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल राइटिंग, देन यू कैन राइट इट डाउन 2L/3 आल्सो. सो आपके पास L था, आपने इतना दे दिया एंड अब आपके पास टोटल 4 लड्डूज है. So according to question, it means that you had L laddus
You have given 2/3 of L. Now you are left with 4 लड्डूस. ऐसे ही करते हो ना आप नॉर्मल सिचुएशन में कि आपके पास सपोज 8 लड्डू थे, आपने उसका हाफ दे दिया, तो हाफ का मतलब कितना हुआ, आपने उसका जितना भी पार्ट है उसको उसको रख लिया माइनस में. नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली 4 लड्डूस. सो 8 minus 4 is equal to 4. So इसी फॉर्म में इक्वेशन सॉल्व करोगे. सो यू विल राइट इट डाउन इन दिस फॉर्म. ठीक है. Now this was another situation. Now let's have question number 1 of exercise 2.2 says, if you subtract 1 upon 2 from a number, now this time I am giving you this number to be x. ये number suppose आपके पास इस बार है x. ठीक है. So if you have a number x, if you subtract 1 upon 2 from a number, अगर आप 1 upon 2 उस number में से हटा देते हो या remove कर देते हो, then whatever you have the result, जो भी आपका रिजल्ट आता है, यू मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2. ठीक है. मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2. देन व्हाट डू यू, इफ यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर फ्रॉम दैट. हियर द बोर्ड इक्वेशन फॉर्मेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कैसे सॉल्व किया जाता है. नाउ इसी उसी पैटर्न पे हम इस क्वेश्चन, दिस इज एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. Now I told you that if you have to assume the number x. So let the number be x. Let the number be x. Why we are assuming x or any variable? Because we don't know what was the actual question. What was the actual number? ठीक है. So we are just taking it randomly that this number can be x now. Now according to the question it says that if you subtract 1/2 from it. So ये मैंने separate कर दिया इससे 1/2. ठीक है. Then it is telling whatever the result come. अभी क्या result है अभी हमें पता ही नहीं है, because we don't know the real situation. हमें सिर्फ अभी x के फॉर्म में पता है. So this is our result now, x minus 1/2. Now the question says if you multiply this result by 1/2, then you get 1/8. This is our equation. If you subtract 1/2 from the number, ये हमने पहला फॉर्म किया. Then if you multiply this result by 1/2, you get 1/8. This is the equation. Now I have told you the first formation of equation. आगे का process आप solve करोगे. Now next condition which is told by question is the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. हमको perimeter पहले से पता है. Then it is telling if the length is 2 meter more than twice its breadth. If the length is 2 meter more twice its breadth, what are the length and breadth of the pool? Now ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सिमिलर है आपके पहले वाले क्वेश्चन के कि एक बॉक्स, एक के पास मार्बल m है और एक के पास 7 मार्बल कम है. ठीक है. तो दो लोग थे वहां पे, है ना. सो यहाँ पर भी क्या है, दो कंडीशंस है बेटा. एक है लेंथ और दूसरी है ब्रेथ. अब देखो यहाँ पर अगर दिमाग लगाओ तो आपसे बोल रहा है कि आपको दोनों ही अननोन है, ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप बात करो एक लेंथ की, तो यहाँ पर बोल रहा है कि लेंथ जो है वो 2 मीटर मोर है ट्वाइस इट्स ब्रेथ के. ठीक है. 2 मीटर मोर है ट्वाइस इट्स ब्रेथ के, बट ब्रेथ तो पता ही नहीं है. सो पहले हम एज्यूम करेंगे ब्रेथ को, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है वो ब्रेथ पे डिपेंड हो रहा है, लेंथ पे नहीं, है ना. ब्रेथ पे डिपेंड हो रहा है, तो पहले हम ब्रेथ को एज्यूम करेंगे. नाउ जस्ट यू ओनली टेक अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ व्हाट कैन बी द ब्रेथ. सो सपोज आई एम टेकिंग, लेट द ब्रेथ बी x. ठीक है. So I have taken breadth as x. Now according to the question it is telling length is, आपको याद होगा ये हम लोगों ने 7th क्लास में और 6th क्लास दोनों में फॉर्मेशन किया था, जिस पे डिपेंड हो रहा होता है हम उसको पहले एज्यूम करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला टर्म एज्यूम करते हैं. ठीक है. और याद रखिएगा कि हम जब भी कोई इक्वेशन फॉर्मेट करते हैं और उसमें अगर सपोज ऐसा लिखा हुआ है कि 4 लेस देन ट्वाइस, तो पहले ट्वाइस होगा फिर 4 लेस देन होगा. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज टेलिंग 2 मीटर मोर ट्वाइस इट्स ब्रेथ.
तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ मतलब हो जाएगा बेटा 2x, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट ट्वाइस, एंड 2 मीटर मोर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2, बिकॉज क्वेश्चन में आपसे बोल रहा था ट्वाइस इज ब्रेथ, ट्वाइस हमने ले लिया, देन 2x प्लस 2, बिकॉज इट वाज टेलिंग लेंथ इज 2 मीटर मोर, सो 2x प्लस 2, नाउ हमको लेंथ भी मिल गया बेटा और हमको ब्रेथ भी मिल गया, ठीक है। देन द क्वेश्चन इज टेलिंग, अ बिगेस्ट हिंट इन द क्वेश्चन वाज गिवन that the perimeter is 154, ठीक है, perimeter is given 154, so according to question, now you are knowing the formula of perimeter, that is 2 into length plus breadth, and it is given in the question 154, so I have written over here 154. Now just put the values and solve it. 2 will remain 2 only into L हमने पहले से ले चुका है, that is 2x plus 2, breadth is only x, which we have already taken, that is equal to 154. now आगे further सिर्फ आपको solve करना है, ये 2x और ये x solve होगा तो हो जाएगा 3x plus 2, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है 2 और यहाँ पर है 154. अब इसके आगे का प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से पता है, यू हैव टू जस्ट ओपन दी ब्रैकेट, जब आप ओपन करोगे ब्रैकेट को और सॉल्व करोगे, यू विल कम टू नो द वैल्यू ऑफ x, और जैसे ही आपको बेटा x मिल जाएगा तो आपको ब्रेथ मिल जाएगी, और जैसे ही आपको ब्रेथ मिल जाएगी, वो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्रेथ लेंथ जो है वो उसके ट्वाइस से 2 ज्यादा है, तो आप उसका ट्वाइस करके उसमें 2 ऐड कर दोगे, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, you will get to know what is the value of length and what is the value of breadth. So we are reading question number 3. The base of an isosceles triangle. Now everybody knows किसी भी ट्राइंगल में बेटा एक या तो एक बेस होता है और उसकी दो साइड्स होती है, बेस जिस पे ट्राइंगल खड़ा होता है, एंड अनदर दो जो बची होती है उसकी वो लेफ्ट साइड्स होती है. अब आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें अगर आप बात करो बेस की तो वो डिफरेंट होता है और उसकी जो दो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है. अगर हम एक नॉर्मल आइसोसेलेस के बारे में बात करें, बाकी आइसोसेलेस होते बहुत टाइप के, ऐसा भी होता है कि बेस और अदर साइड भी इक्वल होती है ना, जस्ट बिकॉज दो टू साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो अभी इस क्वेश्चन में जो हम बात कर रहे हैं उसमें बात हो रही है कि बेस डिफरेंट है और बची हुई जो दो साइड है वो सेम है, ठीक है. सो नाउ जस्ट रीड द क्वेश्चन. The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. इसकी exact equation, exact value दी हुई है. Now the perimeter of triangle is also given 4 whole 2 by 15. ये भी हमको perimeter भी पहले से पता है, ठीक है, perimeter भी हमको पहले से पता है. Now what is the length of either remaining equal side? तो बेटा यहाँ पे remaining equal side में कुछ करना ही नहीं है. You have to assume either x, either b, either s, जो भी वेरिएबल आप चॉइस करो, यू जस्ट एज्यूम इट, ठीक है, एंड यू आर नोइंग, जस्ट फॉर्म द इक्वेशन एंड टेल मी व्हाट कैन यू फाइंड द इक्वेशन. यू थिंक द लास्ट स्टेप विल बी मोर सॉल्व बेटा? 12 by 30 को अभी और सॉल्व किया. Yes ma'am, yes ma'am. हाँ, शशांक, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. Yes. So question number 3 I was discussing, which was discussed by me right now. I told that there is a triangle in question number 3, which is isosceles triangle. ठीक है, which is isosceles triangle. And according to isosceles triangle, it is given in the question that other two sides are equal. So suppose मैं मान लूं अगर ये x है, तो ये वाली भी हो गई x. According to my question, because it is a isosceles triangle. And the third side is telling 4 by 3 centimeter. लिख दिया मैंने. Now question is telling that it has the perimeter 4 whole 2 by 15. ये क्वेश्चन में पहले से दिया बेटा. Perimeter is 4 whole 2 by 15 centimeter. ठीक है. Now I am just rubbing this. Now according to question, you are knowing it is telling the hint क्या दिया हुआ है आपको? perimeter. So equation क्या बना सकते हो आप? perimeter होता क्या है triangle का? sum of its all side. So x plus x again because second side and the third side is 4 by 3 will make total of 4 whole 2 by 15. Why it will make total of
4 whole 2 by 15? Because you are talking about perimeter and perimeter was already given in the question. ठीक है, so अब ये है एक और x, तो एक x और एक x मिलाकर के हो गया टोटल 2x plus 4 by 3 is equal to 4 whole 2 by 15. Now आगे कैसे solve किया जाता है equation को, that I will not tell you because this is already done by us. Yes, I am repeating this one again. In the question it was telling better that this is a triangle which is isosceles triangle, and you are knowing that isosceles triangle has a property that it has two sides equal, and third वाली इसमें पहले से दी हुई है, तो third वाली जो दी हुई है that is 4 by 3 centimeter I have written over here, which are equal I have assumed that they are x. So x और x दोनों बन जाएंगी x x, y दोनों बन जाएंगे because you are talking about an isosceles triangle. So, एक हो गई x, दूसरी वाली भी हो गई x और तीसरी वाली 4 by 3 क्वेश्चन में पहले से दी थी. And you are knowing in the question it was also given the perimeter that 4 whole 2 by 15. Now you are knowing when you talk about the perimeter, with the perimeter of triangle is sum of its all three sides. So according to question, sum of its all side मतलब x, again x and 4 by 3. ये तीनों मिलाकर के will make the total 4 whole 2 by 15 because you are talking about perimeter. Now ये x और ये x will be added together will give you 2x plus 4 by 3 is common here and that is 4 whole 2 by 15. It is the last step. इसके बाद आपको बचा है इक्वेशन को सॉल्व करना, और इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रोसेस आई विल नॉट टेल यू बिकॉज व्हाट इट इज ऑलरेडी टोल्ड बाय मी how you solve equations.